Assalamu alaikum, dear students. We are going to start with unit number 8 and unit number 8 is concerned with prose. ठीक है, इसके यूनिट के अंदर प्रोज के बारे में आपको बताया जाएगा. So first of all, let us have a look at introduction of prose. ठीक है. So what is prose? The word prose comes from Latin word prosa meaning straightforward. पोइट्री को अगर आप देखें तो पोइट्री स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती, यानी कि अल्फाज कुछ और होते हैं, मीनिंग कुछ और होता है. अच्छा, प्रोजा स्ट्रेट फॉरवर्ड शायरी एग्जैक्टली अपोजिट होती है. उसमें सिमिलीज, मेटाफर्स, पन्स, पैराडॉक्सेस इस्तेमाल किए जाते हैं. प्रोज ऑन द अदर हैंड सीधा सीधी बात होती है. ठीक है, इसमें जो अल्फाज जिस सेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं उसी सेंस में उनका जो है वो मीनिंग होता है. प्रोज इज अ टाइप ऑफ लिटरेचर दैट डज नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर फॉर्मल स्ट्रक्चर एंड इज कंसिडर्ड एज ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ स्पोकन और रिटन लैंग्वेज. यानी कि जो आम जबान है उसको प्रोज कहा जाता है. वो जबान जिसमें आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसमें हमारी रोजमर्रा की गुफ्तगू होती है, उस जबान को प्रोज कहा जाता है. प्रोज इज अ टाइप ऑफ लिटरेचर दैट डज नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर फॉर्मल स्ट्रक्चर एंड is considered as ordinary form of spoken or written language. यानी कि ये ऑर्डिनरी फॉर्म होती है रिटन लैंग्वेज की, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें जो हैं वो नहीं होती. Furthermore, prose is a type of writing that is usually used or adopted for description of facts or the discussion of ideas. यानी कि ये वो फॉर्म ऑफ राइटिंग है जिसको फैक्ट्स की डिस्क्रिप्शन के लिए, हकाइक को बयान करने के लिए जो है वो अडॉप्ट किया जाता है. प्रोज इज रिटन विदाउट फॉर्मल पैटर्न ऑफ वर्स, राइम और मीटर. यानी कि प्रोज के अंदर जो राइम है, जो मीटर है, जो रिदम है, जिस तरीके से शायरी में राइमिंग वर्ड्स होते हैं जो कि आखिर में रिपीट होते हैं, जो कि म्यूजिक पैदा करते हैं, जैसे रिदम होता है, एक लय लय होती है, वो चीज़ें प्रोज में नहीं होती. शायरी में लाइनें जो हैं वो वर्स की फॉर्म में, स्टेंजा की फॉर्म में लिखी होती हैं. ऑन दी अदर हैंड प्रोज जो है यहाँ पे लाइंस जो हैं या लैंग्वेज जो है उसको पैराग्राफ्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है. जो अभी आप चीज़ें पढ़ रहे हैं आपके सामने, कि ये भी प्रोज की एग्जाम्पल है. Although some works of prose contain traces of poetic devices such as meter, rhyme, but that kind of conscious blend of poetic devices and ordinary language is known as prose poetry. इनके बाद प्रोज की फॉर्म्स हो सकता है कि उनके अंदर थोड़ा सा रिदम हो, और लेकिन अगर होता है तो उसको प्रोज पोइट्री कहा जाता है, उसको प्योर प्रोज नहीं कहा जाता. So as said earlier that prose is straightforward and ordinary form of writing that does not follow any particular formal structure. Therefore, prose is often considered the most suitable writing form where the writer's aim is to give facts and information. यानी कि ये इसकी सीधी सीधी डेफिनेशन है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म है, ऑर्डिनरी फॉर्म है, और इसको इस्तेमाल किया जाता है जब राइटर किसी को फैक्ट्स मुहैया करना चाहता है, या जब राइटर्स जो है वो किसी इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करना चाहता है. तो हमेशा फैक्ट्स को और ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल लैंग्वेज जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज जो होती है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होती है. ठीक है, प्रोज फॉर्म ऑफ राइटिंग आपको न्यूज़पेपर्स के अंदर, मैगजीन्स के अंदर, शॉर्ट स्टोरीज, लेटर्स, एसेज, हिस्ट्री, बायोग्राफी एंड मैनी अदर फॉर्म्स ऑफ राइटिंग जो है उसमें आपको प्रोज मटेरियल दिखाई देता है. द स्टेटस ऑफ प्रोज हैज चेंज्ड ओवर टाइम. यानी कि ज़माने के साथ साथ प्रोज जो है उसको, उसका स्टेटस चेंज होता चला गया है. प्रोज को जो है पुराने ज़माने में ऑर्डिनरी और डल समझा जाता था, और एक ज़माने में प्रोज का मतलब ही अनइमेजिनेटिव या फिर डल हुआ करता था. ठीक है, लेकिन आज प्रोज जो है इट हैज़ इमर्ज्ड एज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर. ठीक है, मतलब कि शायद प्रोज जो है वो भी बिल्कुल एक लिटरेचर की फॉर्म है, और एक ऐसी फॉर्म है कि जिसके अंदर आप अपने सोफिस्टिकेटेड आइडियाज़
एजुकेटेड आइडियाज़, फिलोसॉफिकल आइडियाज़ जो हैं उनको आप इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं. Now, first of all, we are going to have a look at the difference between prose and poetry. जहाँ तक अक्सर आपने ये चीज़ जो है वो नोट की होगी कि शायरी को आर्ट के इक्वल डिक्लेयर किया जाता है, यानी कि शायरी जो है वो आर्ट है, बिल्कुल ऐसे कि जैसे पेंटिंग होती है, बिल्कुल ऐसे कि जैसे स्कल्पचर होता है, इसी तरीके से शायरी को एक आर्ट की हैसियत हासिल है. और इसको इस आर्ट को बिल्कुल वही हैसियत हासिल है जो कि म्यूजिक को, जो कि सिंगिंग को हासिल है. ठीक है, क्योंकि इसके अंदर रिदम होता है, इसकी कंपोजिशन के लिए काफ़ी जहन लगाना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करना पड़ती है. ठीक है, और इसकी जो रीडिंग है, उस रीडिंग के बाद आपके जो रीडर्स हैं वो एक्साइटमेंट फील करते हैं, वो खुशी महसूस करते हैं. ठीक है, सो आइदर रिटन डाउन और स्पोकन ऑरली, पोइट्री इज इमेजिनेटिव एंड अट्रैक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ वंस थॉट. पोइट्री इज metrical, which means that poems are metered or structured, यानी कि खास स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर के अंदर अल्फाज जो हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है. पोइट्री हैज़ राइम. ठीक है, और इसके अंदर रेफरेन यानी कि वो जो रिपीटेड लाइन है वो भी होती है. सेंटेंसेस नहीं होते, रादर लाइंस होती हैं जो कि इनकम्प्लीट होती हैं, जो कि कहाँ से नई लाइन शुरू होती है इस चीज़ का हमें कोई आइडिया नहीं होता. फुल स्टॉप्स और जो आपके पंक्चुएशन के रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता. ऑन दी अदर हैंड, प्रोज इसके कंपैरिजन में इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द लैंग्वेज जो है, सिंटेक्स के जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करती है. बिकॉज ऑफ दिस, prose is observed in many areas of writing, most especially in newspapers and magazines. It is very similar to poetry in the sense that it can either be written or spoken, but without metered or structured quality of the poetry. प्रोज जो होती है वो इनफॉर्मल नेचर की होती है, यानी कि फॉर्मेलिटी या वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो खूबसूरती, जो रिदम, जो राइम शायरी में दिखाई देता है वो यहाँ पे नहीं दिखाई देता. ठीक है, और इसको डल के इक्विवेलेंट डिक्लेयर किया जाता है बाज लोगों की जानिब से. ठीक है, अ सेंटेंस इज कंसीडर्ड टू बी इट्स बेसिक यूनिट, यानी कि शायरी जो है उसमें लाइंस होती हैं, वर्सेस होती हैं. ऑन द अदर हैंड, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट prose, so in prose a sentence is considered to be the basic unit, and these sentences they are further organized into the form of the paragraphs. ठीक है, a prose poem is written as prose. In other words, it is a mixture of poetic devices and ordinary language. A true poem has all the essential elements such as rhythm, rhyme, repetition, assonance, consonance and imagery. यानी कि प्रोज पोएम्स भी होती हैं. प्रोज पोएम्स जो हैं दे आर मिक्सचर ऑफ ऑर्डिनरी लैंग्वेज एंड द पोएटिक लैंग्वेज. इनके अंदर कुछ डिवाइसेस भी होती हैं, हाउ एवर वोकेबलरी दैट इज यूज्ड इज ऑर्डिनरी. ठीक है, नीचे एक चार्ट दिया गया है, इस चार्ट को देखें और जहाँ पे प्रोज और पोएट्री का कंपैरिजन दिया गया है. ठीक है, सो prose is written without a formal pattern of verse, rhyme, or meter. Poetry, on the other hand, aims to convey ideas, emotional experiences through the use of meter, rhyme, imagery in a carefully constructed metrical structure. Prose is structured into sentences and paragraphs, while lines and stanzas tend to be associated with the poetry. Prose is the language of everyday speech. Everyday speech की language होती है. ठीक है, poetry, on the other hand, is an art form which tends to express the thoughts and the images in the fewer words. के चंद अल्फाज यानी कि कम से कम अल्फाज जो हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए पोइट्री के अंदर. लेकिन यहाँ पे प्रोज में ऐसा नहीं होता. प्रोज जो है वो टोटली डिफरेंट होती है. Furthermore, prose follows
The standard rules in grammar, punctuation, capitalization, and sentence structure. Poetry, on the other hand, follows set pattern, and in order to follow the pattern that has been set by the poet has license to violate all the rules and regulations of language, and that is called the poetic license. यानी कि शायर जो है वो पोएटिक लाइसेंस को इस्तेमाल करके जो लैंग्वेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको वायलेट कर सकता है, लेकिन प्रोज राइटर्स ऐसा नहीं कर सकते, उनको सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स, ये चीज़ें इसी फॉर्म में लिखना होती हैं। तो अब आपको प्रोज के बारे में थोड़ा आइडिया हो गया होगा। दोनों फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन हैं, एक जो है वो लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो करती है और पोइट्री ऑन दी अदर हैंड लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो नहीं करती। ठीक है, अच्छा जी। दोनों चीज़ें सिर्फ ओवरलैप इस तरीके से करती हैं कि रीडर्स को एक्साइट करती हैं। प्रोज जो है वो भी इमेजिनेटिव नेचर की हो सकती है, पोइट्री के अंदर भी सिंबोलिज्म होता है और प्रोज के अंदर भी सिंबोलिज्म होता है। इखलाकियात का दर्स पोइट्री के अंदर भी दिया जाता है और प्रोज के अंदर भी दिया जाता है। दोनों फॉर्म्स जो है वो एक्सप्रेसिव हैं, यानी कि शायर जो है वो अपने इनर फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। ये चीज़ें पोइट्री की और प्रोज की ओवरलैप करती हैं। ऑन दी अदर हैंड इनकी बाकी चीज़ें जो हैं वो टोटली डिफरेंट है। ठीक है, प्रोज जो है वो भी अगर हम नॉवल को देखें तो नॉवल को भी प्रोज कहा जाता है। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट नॉवल, तो नॉवल जो है वो एक ऐसा अब प्रोज की फॉर्म है जो कि एक इमेजिनेटिव नेचर की स्टोरी होती है, जिसको इमेजिनेटिव अंदाज में एक्सप्रेस किया जाता है, इमेजिनेटिव अंदाज में उसको बयान किया जाता है। ठीक है, टू इलस्ट्रेट द डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोएट्री रीड द फॉलोइंग टू एग्जांपल्स। दो मिसालें दी गई हैं प्रोज की और पोएट्री की। ठीक है, हैप्पीनेस, गोइंग होम, happiness at the thought of going home for such an occasion. I liken to an autumn day. A warm glow fills my heart like slowly burning embers as I think of my dear parents who gave me life in the springtime of their love. The God given joys I have known, I liken to spring with new life bursting. Bursting forth my reminds me of sorrows I have known. Yet your love, God's strength have given me courage to go on. Remembering summer, I rejoice at the warmth of the happy times, found childhood memories, and joy of daily living. Sharing life with friends and loved ones, all this I do because of you. The same lines have been converted into the poetry. Happiness at the thought of going home for such an occasion. I liken to an autumn day. A warm glow fills my heart like slowly burning embers as I think of my dear parents who gave me life in the springtime of their love, the God given joys I have known. I like to spring with new life bursting forth. My husband, children, grandfather, beauty in nature, in song. The chill of winter reminds me of sorrows I have known. ठीक है, तो यानी कि अब आगे उसी की एक्सटेंशन है, उसी को कंप्लीट किया जा रहा है। तो इसकी फॉर्म जो है वो टोटली आप ये कहें कि ये डिफरेंट है। जी, तो दोनों फॉर्म्स पढ़ ली आपने। ठीक है, आफ्टर रीडिंग यू कैन सी दैट बोथ ऑफ द फॉर्म्स दे आर द सेम as far as language is concerned. However, the way in which that language has been organized is totally different. Okay, both of them, they have rhyme, they have rhythm, and they have beauty. The first one is a prose passage, and we surely are going to enjoy the beauty of that passage. However, the second one is easier to read, and it is much easier to see it, and it is much easier to understand it. Prose has sentences arranged in paragraphs, कि अब प्रोज जो होती है उसके अंदर जुमले जो होते हैं उनको
पैराग्राफ्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है। This information presented is more matter of fact many times than in poetry कि प्रोज जो है उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की जाती है वो पोइट्री की निस्बत काफ़ी ज़्यादा होती है। द लैंग्वेज ऑफ प्रोज इज स्ट्रेट फॉरवर्ड विद लेस फिगरेटिव लैंग्वेज देन द पोइट्री की सीधी सीधी जबान होती है। फिगरेटिव लैंग्वेज या फिर फिगर्स ऑफ स्पीच जो होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं होता, उनका इस्तेमाल बहुत कम होता है। पोइट्री has a different form than prose, where prose has paragraphs, poetry has stanzas, where prose has sentences in a paragraph coming one after another. Poetry divides into shorter lines with a phrase or group of words that join together on each line. Poetry is created with figurative language such as poetic devices. ठीक है, poetic devices जो कि हमने आगाज में पढ़े थे, ठीक है, वो शायरी को शायरी बनाते हैं। Okay ji, let us read these passages. A woman stands on a mountain top with the cold seeping into her body. She looks on the valley below. As the wind wisps around her, she cannot leave to go to the peaceful beauty below. In the valley, the sun shines from behind the clouds, causing flowers to bloom. A breeze sends quivers through the leaves of the trees. The water gurgles in a brook. All the woman can do is cry. ये प्रोज वर्जन है, ठीक है, इसी पैराग्राफ इसी पोएम का, जो कि पोएम आपको नीचे अब पोइट्री की फॉर्म में दी गई है, ठीक है। अब इसमें आप देखें तो आपको राइमिंग वर्ड्स नजर आ रहे हैं, वहां पर आपको राइमिंग वर्ड्स नजर नहीं आ रहे क्योंकि उसको लाइंस की फॉर्म में, सेंटेंसेस की फॉर्म में लिखा गया है। The woman stands upon the barren peak, gazing down on the world beneath. Peak beneath. The lonely chill seeps from the grounds into her feet, spreading upward bound. The angry wind whistles round her head, whipping her hair into streaming snakes. While she watches, wishes weekly veils beyond the mountain, sunshine peaks, teasing flowers to survive and thrive. The breeze whispers through the leaves, causing gentle quivers to sway the trees. Laughter gurgles as the splashing brook, playful, tumbles over rugged rocks while the woman above can only grieve. Exercise number 1 है. This exercise will help you understand the difference between prose and poetry. Here is a short prose passage which includes a lot of repetition of the words. Can you rewrite it in the form of a poem? You came, you were late as usual, but you came. It was a rainy day, but you came. And sunshine filled the world, and music filled the world, though it was raining and grey. So, this is the passage, and you have to rewrite it in the form of the poem. ठीक है? If you can, give it a try. So it will help you develop the understanding of difference between poetry and prose. Now here's a poem. Can you convert it into the prose passage? It is very easy. Poem को prose में convert करना आसान है. However, converting prose into poetry, it becomes difficult for us since English is second language for us, and we are not as competent in English language as we are supposed to be because it is not our native language. So, however, converting a poem into prose is very easy job. Always playing in the muddy puddles, always getting in scrapes and muddles. Poor children. Poor children are always found playing in the muddy puddles. मतलब कि इस तरीके से आप जुमला बना सकते हैं. Poor children dirty their clothes, dirty their hair, and almost always on the welfare care. And they live on the welfare care.
Poor child, living in the dirty slums of a town. When will they ever pull them down? Poor child. Will anything ever be done? Will his time ever come? Poor child. So that is the poem. Now, try your level best to convert this poem, this piece of poetry, into a paragraph. I'll leave this poem on the screen for a couple of minutes, take 2 to 3 minutes, and write it in the form of a paragraph and share it in the uh, comments section. Okay, so take 2 minutes and ट्राई योर लेवल बेस्ट कि जितना आप अच्छा कर सकते हैं आप इसको जो है वो लिखें और उसको शेयर करें शाबाश I'll be waiting for your responses. Please try your level best to do in the best possible way you can. Okay, let us now move toward exercise number 3. We are giving you an opportunity to be creative. Write one prose paragraph on any of the following topics, then write a poem about the same subject, incorporating the same ideas. कि सबसे पहले जो टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक के हवाले से आपने एक पैराग्राफ लिखना है फिर उस पैराग्राफ को आपने पोएम के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है ठीक है लेकिन आपको आप अपने आप को बिल्कुल ऐसे भी ना समझें कि आप लिख नहीं सकते आप नज़में लिख नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है पाकिस्तानी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर उसके अंदर काफ़ी बड़े-बड़े नाम हैं और ये वो नाम हैं कि जिन्होंने अंग्रेज़ी ज़बान में शायरी भी लिखी है जिन्होंने अंग्रेज़ी ज़बान में प्रोज़ भी लिखी है जिन्होंने अंग्रेज़ी ज़बान में नॉवेल्स भी लिखे हैं तो आप भी अ, मुस्तकबिल में ऐसे ही शायर और ऐसे ही नॉवेलिस्ट भी बन सकते हैं ठीक है जो मशहूर नाम है इसमें अ, एक वो हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं शायद सोहरवर्दी से नाम आगाज़ होता है अहमद अली मुमताज़ शाहनवाज ज़ेबुन्निसा हामिदुल्लाह तो ये वो सारे लोग हैं जो कि पाकिस्तान बनने के वक्त लिख रहे थे ठीक है तो आजकल मुनीज़ा शमसी जावेद काजी रुखसाना अहमद तारिक रहमान मोहसिन हामिद अतर ताहिर हनीफ कुरैशी ये वो लोग हैं सारा सुलहरी है आमिर हुसैन है कैसरा शिराज हैं ये वो लोग हैं जो कि आजकल लिख रहे हैं मोहसिन हामिद नावलिस्ट हैं नदीम असलम नावलिस्ट हैं सारा सुलहरी नावलिस्ट भी हैं पोइट भी हैं आमिर हुसैन पोइट हैं कैसरा शिराज जो हैं ये शॉर्ट स्टोरीज लिखती हैं तो इस तरीके से मुख्तलिफ लोग हैं जो कि पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर पलने बढ़ने के बावजूद वो लिखते हैं
नीचे एक द डायरी ऑफ द सोशल बटरफ्लाई है, जिसको मोनी मोहसिन ने लिखा है। उसमें से एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है आपको, जो कि प्रोज को एग्जाम्प्लीफाई करेगा और प्रोज को एक्सप्लेन करेगा। सबसे पहले मोनी मोहसिन के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है कि मोनी मोहसिन इज बोर्न एंड ब्रेड इन लाहौर। शी रिसीव्ड मोस्ट ऑफ हर एजुकेशन इन लाहौर, after which she went to Cambridge University. She writes on culture, heritage, and environment, and has traveled extensively throughout Pakistan, documenting life in more remote towns. She joined the Friday Times and later moved to London in 1995, where she lives with her husband and two children. Prose, being social document, not only reflects the character and people of particular society but also their culture, values and traditions के प्रोज जो फॉर्म है वो लोगों की ज़िंदगी को रिफ्लेक्ट करती है, उनके कल्चर को, उनकी रवायात को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, नीचे पैसेज है उसको आप रीड आउट करें तो इसके अंदर आपको, इस पैसेज के अंदर जो कि मोनी मोहसिन के नावल द डायरी ऑफ द सोशल बटरफ्लाई से लिए गए, उर्दू के वर्ड्स का इस्तेमाल भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, आई हैव ऑल्सो गॉट सच बैड किस्मत, किस्मत का वर्ड, ठीक है, फेट का वर्ड अंग्रेजों के यहाँ इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारे यहाँ किस्मत का वर्ड, अब ये भी एक तरीका कार होता है कि आप मिक्स्ड लैंग्वेज में लिखते हैं। व्हेन यू राइट इन द मिक्स्ड लैंग्वेज, so it means that you are inviting the English people to look up द मीनिंग ऑफ वर्ड किस्मत की। जो किस्मत वर्ड है उर्दू में इसका क्या मतलब है, ठीक है, तो वो ढूंढेंगे, अब जाहिर है अगर वो समझना चाहते हैं इसको। द पार्टी सीजन्स ऑन माई हेड एंड आई हैव गॉन एंड गॉट ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस जो है ये मर्ज का नाम है। सो मच ऑफ फीवर आई हैव एंड कफ and cold, and nothing's helped. The only thing that helped me is homeopathic medicine. ठीक है, homeopathics are very in these days. डॉक्टर्स को तो कोई पूछता ही नहीं है, एंड गुड थिंग ऑल्सो, जब पूछें एंटीबायोटिक्स ट्रांसक्राइब कर देते हैं। एंटीबायोटिक्स टेक कर करके माई इंटेस्टाइल्स हैव, इंटेस्टाइन्स लिखना चाहती है लेकिन वो उसको पाकिस्तानी उर्दू में लिख रही है कि इंटेस्टाइल्स हैव रूटेड, आई स्वेयर। सेकंड पैसेज पढ़ें, बट बिसाइड्स ऑफ माई इलनेस आई हैव नॉट मिस्ड अ सिंगल पार्टी और शादी, बिकॉज आई नो हाउ मच पीपल लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं टू माई कमिंग। सो फर्स्ट आई वेंट टू शहरियार अलीज वेडिंग, बड़ा फिट सीन था, with fountains and peacocks and jewels to die for, nice plot they have for a party। वैसे बिग बिग ओपन ओपन, जो हमारी देसी इंग्लिश है, ठीक है, जो रियल इंग्लिश है उसमें एक वर्ड जो है वो रिपीट नहीं होता, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ बड़ा बड़ा जो है कि बहुत बड़ा बड़ा था जी वहाँ पे सब कुछ, तो मतलब बिग बिग ओपन ओपन, बड़ा खुला खुला घर है जनाब आप लोगों को। तो उसी चीज़ को एज इट इज़ जो है उसने इंग्लिश के अंदर इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की है। एंड द बेस्ट एड्रेस इन लाहौर 1 FCC। देन देर वॉज दैट लंच फॉर सारा गुलेरी भाई, जिसने राइट की थी वो बुक मीटलेस वेज, मीटलेस डेज किताब का नाम है, सारा सुलहरी नाम है, ठीक है। She teaches at Yale. She's written a new book called Boys Should Be Boys. Lunch was nice, but I left before the guest speaker's speech because I did not want to miss the final episode of क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ठीक है। Again, it is an incorporation of Pakistani culture where Pakistani women, they love to watch dramas and they're willing to sacrifice important social functions so that they can catch the glimpse of their favorite TV drama serial. Then we have paragraph number 4, and it says, but imagine what happened when I got home.
Kulchu was watching the meekest link on BBC. I told him to switch it off, but he said first I had to buy him a Sony Flatrom for his room. Look at him. When did he get so materialistic, so matlabi? Where does he learn it from? Must be school only. Everything bad comes from there only. ठीक है कि सब कुछ बुरा जो है वो स्कूल से ही होता है. Anyways, then there was Ahmed Rashid's Christmas party full of left wing wale. You know, Rashid Rahman, Najm Sethi, Ijazul Hassan, and the whole NGO crowd, wearing khadar and talking बोर थिंग्स. अगेन वही हमारा जो लोकल लिंग्विस्टिक्स है कि एक चीज को रिपीट करना. बोर थिंग्स लाइक politics and economics. Food was good, but turkey and lamb roast and crispy salad with lovely dressing gowns. Paragraph number 6. After lunch, मुझे थोड़ी सी weakness हो रही थी, but I took two of my pills and drove out to बलीज बेदियां बाश लिखा है. बेदियां मुझे अब इसका एग्जैक्ट नहीं पता कि ये यहाँ पे क्या कहना चाह रही है. मे बी किसी जगह का नाम है. एवरीबॉडी वाज देयर इंक्लूडिंग शौकत एंड मरीना. भाई वो न्यूयॉर्क वाले. आई हियर शी नोज एवरीबॉडी हुज एवरीबॉडी इंक्लूडिंग कॉफी अनन, मूडी एलन एंड पेरिस शेरिटन. सॉरी, हिल्टन, पेरिस हिल्टन. मैंने दबा के फिर की. Rushed around saying hello to everyone, even those I didn't know, because I thought if they are bullies, they must be important or rich or both, preferably both. So these are certain examples of prose that is written by Moni Mohsin, and it is a beautiful novel that is called The Diary of the Social Butterfly. And these paragraphs have been extracted from those that novel. So you must have noticed while reading the passage that there are plenty of Urdu words and expressions used by the writer. Isn't it surprising that the main language of writing is English, yet the writer is mixing Urdu in it? ठीक है, ये mixing हो रही है. अब ये जो mixing होती है, mixing of one language into another language, the way I am speaking, the way you speak, often आप गुफ्तगू के अंदर अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं. इस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं जो कि दूसरी लैंग्वेज. लेट्स सपोज यू आर स्पीकिंग इन उर्दू, बट सर्टेनली देयर कम सर्टेन वर्ड दैट यू विश टू स्पीक इन इंग्लिश, सो यू speak that word in English and then you switch back to Urdu. That is called code switching. Code switching is perhaps is the right word that can explain the mixing of two languages. Languages को technical term में codes कहा जाता है क्योंकि language होती ही code form में है. ठीक है, तो इसको code mixing कहा जाता है. Linguistics की term. So when two languages are used together while speaking and writing, we call this code switching. We are sure that you must have noticed in many television shows, different channels, where people, especially the compares and the anchor persons, mix Urdu and English. We can say that in the prose sample that you have read, the writer switches code or switches from language A, that is English, to language B, that is Urdu. Let us notice code switching in para 1. I have also got such bad kismet. किस्मत का वर्ड है यहाँ पे. ठीक है, अब ये हम इसको पढ़ चुके हैं तो इसको छोड़ दें बस. Why has the writer used these expression? What may be the reason? Now let us substitute the words with English. I have got such a bad luck. The party season is on my head and I have gone to got bronchitis. So much fever I had and cough and cold and nothing's helped. The only thing that's helped is a homeopathic brother. Homeopathics are very
In these days, doctors, no one asks, and good thing also, whenever asked, antibiotics transcribed, do antibiotics take again and again? My testicles have rooted, I swear. So, what do you think about the passage? We have translated Urdu words into English, but don't you think that the passage looks or sounds odd कि अगर हम इन एक्सप्रेशंस को ओरिजिनल लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश के अंदर ही लिखें तो ये अजीब व गरीब दिखाई देंगे। तो इस चीज़ के लिए जो है वो उर्दू को उसने मिक्स किया है ताकि वो जो ख़ास हमारा फ्लेवर है, जो लोकल फ्लेवर है, उसको इंट्रोड्यूस कराया जा सके। अब इसी तरीके से पैराग्राफ नंबर 4 की रीडिंग है। प्लीज़ लीव इट, इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ लेट रीड अगेन पैराग्राफ 1 एंड आइडेंटिफाई द स्पेलिंग मिस्टेक्स। स्पेलिंग मिस्टेक्स काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है, इसके अंदर। ब्रोंकाइटिस, कफ, होम्योपैथिक्स, एंटीबायोटिक्स ट्रांसक्राइब इन टेस्टिकल्स, ठीक है, बिकॉज दैट इज इंस्टेंस टाइम। ये अब हमारे देसी स्पेलिंग्स हैं, ठीक है, ये हमारे देसी स्पेलिंग, ये हमारा देसी अंदाज जो है बोलने का किसी भी वर्ड्स को, किसी भी लफ्ज को, वो यहाँ पे जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। Exercise number 5. Now here is few more words taken from paragraph 4 and 6. The first one refers to the program that is shown on BBC television. We have corrected the spelling mistake, ठीक है। सोनी फ्लैटरॉन टीवी आते थे, ये उसकी बात हो रही होगी। कॉफी आनंद लिखा हुआ है, कॉफी विद करण होगा, ठीक है। मूडी एलन, इसका मुझे जो है वो इस वक्त अंदाज़ा नहीं हो रहा, ये किसी शख्स का नाम है, लेकिन ALLAN है मेरे ख्याल से, या आई डोंट नो अबाउट दैट। अच्छा जी, छठी एक्सरसाइज है कि लोगों के नाम हैं, बताएं किस लिए फेमस हैं। अच्छा, वुडी एलन है, ठीक है, वुडी एलन नहीं, वुडी एलन है। नेक्स्ट, मौत स्मोक का एक पैसेज आपको दिया गया है। मौत स्मोक जो है वो मोहसिन हामिद है, हमारे पाकिस्तानी राइटर, उनका नावल है। Suddenly the air is still and the trees are silent, and I can hear laughter from my neighbor's servant quarters. Then the wind returns, bringing the smell of wet soil and pair of orange parrots that swoop down to take shelter in the lower branches of the banyan tree, where they glow in the shadows. A raindrop strikes the lawn, sending up a tiny plum of dust. Others follow, a barrage of dusty explosion bursting all around me. The leaves of the banyan rebound from their impact. The parrots disappear from the sight. In the distance, the clouds seem to reach down to touch the earth. And then a curtain of water falls quietly and shatters across the city with a terrifying roar. Drenching me instantly, I hear the hot concrete of the driveway hissing, turning back into steam, and I smell the dead grass that lies under the dirt of the lawn. मौत स्मोक बड़ा खूबसूरत नावल है, ठीक है, मोहसिन हामिद साहब का, और उसका पैसेज आपके साथ जो है वो शेयर किया गया है। दो पैराग्राफ आपने पढ़े हैं ऊपर, ठीक है, प्रोज सैंपल से। इसके अंदर वो कहता है कि ऑप्टिमिज्म का मूड क्रिएट किया गया है और हैप्पीनेस का मूड सॉर्ट ऑफ क्रिएट करने की कोशिश की गई है। एंड they want you to recognize the expressions that are used to express the optimistic feelings or the optimistic mood. So, laughter, the wind returns, the smell of the wet soil, a pair of orange parrots, lower branches of the banyan tree, they glow in the shadows. ये सारे वो एक्सप्रेशंस हैं जो कि लाइट मूड को, हैप्पी मूड को, ऑप्टिमिज्म को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल हुए हैं। द स्मेल ऑफ द वेट सॉइल, द soil becomes wet because of the rain. The pair of orange parrots, if there is a parrot that is all alone, then it will be sad. However, if there is a couple, they can stay happy.
अच्छा जी, देन वी हैव एक्सरसाइज नंबर 8, द राइटर यूज पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, छोड़ दें, देख लीजिएगा खुद, आप लोग देख लीजिएगा। Now let us move on. Reading a short story. A short story is a kind of prose fiction, usually more compact and intense than a novel. And the short novelet. ठीक है, शॉर्ट स्टोरी आपको दी गई है पढ़ने के लिए। शॉर्ट स्टोरी जो है वो भी प्रोज की एक फॉर्म होती है, फिक्शनल नेचर की होती है। ठीक है, एडगर एलन पो की कहानी है जो कि आपको दी जा रही है। एडगर एलन पो के बारे से बताया गया है कि बस एन अमेरिकन पोइट, अमरीकी थे, शायर थे, शायरी भी लिखी है। तो जिस तरीके से आपने एलिमेंट्स पढ़े थे ड्रामा के, जिस तरीके से एलिमेंट्स आपने पढ़े थे पोइट्री के, जिस तरीके से एलिमेंट्स आपने पढ़े थे नावल के, ड्रामा और नावल के एलिमेंट्स जो हैं वो शॉर्ट स्टोरी के एलिमेंट्स से मिलते हैं, क्योंकि इसमें भी सेटिंग होती है, इसमें भी प्लॉट होता है और इसमें भी करैक्टर होते हैं। तो नावल और शॉर्ट स्टोरी पर्टिकुलरली इन पर्टिकुलर जो है ये एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, क्योंकि शॉर्ट स्टोरी क्या है, इट इज़ अ मिनिएचर नावल, यानी कि नावल की शॉर्टेस्ट फॉर्म जो है उसको शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है। शॉर्ट स्टोरी की वेरियस टाइप्स होती हैं, हॉरर स्टोरीज, फैंटेसीज, रोमांटिक, एडवेंचर एंड साइंस फिक्शन। सो इन मैनी वेज दे आर मिनिएचर वर्जन ऑफ द नावल। और ये एक खुद का एक मतलब कि कंप्लीट आर्ट इट इज़ इन इटसेल्फ। एक्सरसाइजेज हैं फिर कुछ 10वीं 11वीं 12वीं, इनको प्लीज़ आप खुद देखिएगा। शॉर्ट स्टोरी जो चूज की गई है वो एडगर एलन पो की है, द टेल टेल हार्ट। ठीक है, डिफिकल्ट वोकेबलरी है जो सबसे पहले उसको देख लें। फोरसाइट का मतलब होता है मुस्तकबिल देखना, डिसिमुलेशन, हिडन अंडर द फॉल्स अपीयरेंस, वेक्स्ड का मतलब है सैड, troubled, agitated. We have the word sagacity, that means sound judgment, hearkening, giving careful attention, of a feeling of fear, wonder, distinctness, over acuteness, concealment, vain, scantling। ये पूरी वोकेबलरी है, मुश्किल अल्फाज हैं जो कि इसके अंदर इस्तेमाल हुए हैं शॉर्ट स्टोरी के। True, nervous, very, very dreadful nervous. I had been and am. But why will you say that I am mad? The disease had sharpened my senses, not destroyed, not dulled them. Above all was a sense of hearing acute. I heard all the things in the heavens and in the earth. I heard many things in the hell. How then am I mad? Hearken and observe how healthy, how calmly I can tell you the whole story. It is impossible to say how first the idea entered my brain, but once conceived, it haunted me day and night. यहाँ पे जो है वो uh, सवाल हैं एक दो जो कि आपसे पूछे गए हैं कि वी हैव बीन इंट्रोड्यूस टू द नैरेटर आई, हु इज आई, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू यू थिंक आई इज। ठीक है, कि आई के बारे में मतलब कि अब हमें पता ये चलता है कि ये कोई डिजीज्ड इंडिविजुअल है जो कि बीमार है, और इस बीमारी ने इम्पैक्ट इसकी पर्सनैलिटी पे ये किया है कि इसकी जो सेंस ऑफ हियरिंग है ये ज़्यादा मैच्योर हो गई है, ये ज़्यादा रिच हो गई है, वो चीज़ें ज़्यादा से सुन सकता है। व्हाट डिजीज डू यू थिंक द पर्सन और द नरेटर आई सफर्स फ्रॉम, क्या आपको क्या लगता है कि ये बंदा कौन सी बीमारी जो है उसमें ये मुब्तला है। तो इफ़ वी लुक एट द पिक्चर, सो हमें लगता ये है कि दैट इंडिविजुअल इज विक्टिम ऑफ ब्लाइंडनेस। अच्छा जी, आगे पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट देयर वाज नन, पैशन देयर वाज नन, आई लव्ड द ओल्ड मैन, ही हैड नेवर wronged me, he had never given me insult, for his gold I had no desire. I think it was I, yes, it was this one of his
resembled that one of a vulture. Okay, I remember this story now that I have read it. Sorry. This is an individual who's suffering from psychological disorder, and he uh, hates a man. He hates one eye of an old man. ठीक है और वो ये कहता है कि that eye resembles the eyes of the vulture. It's a pale blue eye with a film over it. Whenever I fell upon me, my blood ran cold. And so, by degree, very gradually, I made up my mind to take the life of the old man and thus rid myself of the eye forever. तो वो कहता है कि ये आंख मुझे जरा भर नहीं पाती थी वो कहता है मैंने फैसला किया कि इस बंदे को खत्म करूंगा ताकि ये आंख मुझे ना देखनी पड़े नाउ दिस इज द पॉइंट यू फैंसी मी मैड men know nothing but you should have seen me how wisely I proceeded with what caution with what foresight, with what dissimulation I went to work. I was never kinder to the old man then. I was never kinder to the old man than during the whole week before I killed him. And every night about midnight, I turned the latch of his door and opened it. Oh, so gently. And then, when I had made an opening sufficient for my head, I put in a dark lantern, all closed so that no light shone out, and then I thrust my head. What is this about a man that bothers the narrator? Why? What turns his blood cold? The sight of the eye, वो जो आंख है उस शख्स की, that turns his blood cold. Oh, you would have laughed to see me how cunningly I thrust in it. I moved it slowly, very, very slowly, so that I might not disturb the old man's sleep. It took me an hour to place my whole head within the opening so far that I could see him as he lay upon his bed. Ha! Would a madman have been so wise as this? And then, when my head was well in the room, I undid the lantern cautiously, oh so cautiously, for the hinge creaked. I undid it just so much that a single thin ray fell upon the vulture eye. And this I did for 7 long nights, every night, just at the midnight. But I found the eye always closed, so it was impossible to do the work, for it was not the old man who vexed me, but the evil eye. वो कहता है कि 7 रातें में आया उसके दरवाजे को ओपन करके उसकी आंखों के ऊपर आके कहता है रोशनी डाली कि वो आंख ओपन करे तो मुझे देखे लेकिन वो कहता है कि ओल्ड मैन वाज asleep and when he was asleep I did not hate the old man rather I hated his eye कि जो उसकी आंख थी जो कि वल्चरिस्टिक नेचर की आंख थी कहता है उससे मुझे नफरत थी And every morning when the day broke I went boldly into the chamber and spoke courageously to him, calling him by name in hard tone and inquiring how he had passed the night. So you see, he would have been very profound old man indeed to suspect that every night, just at 12, I looked in upon him while he slept. Upon the 8th night, I was more than usually cautious in opening the door. A watch's hand moves more quickly than did mine. Never before that night had I felt the extent of my own powers, of my sagacity. I could scarcely contain my feelings of triumph. To think that there I was, opening the door little by little, and he not even to dream of my secret deeds or thoughts. I fairly chuckled at the idea, and perhaps he heard me, for he moved on the bed suddenly as if startled. Now you may think that I drew back, but no. His room was as black as a pitch, with a thick darkness, for the shutters were close fastened through the fears of robbers, and so I knew
that he could not see the opening of the door, but I kept pushing it on steadily. I had my head in, and was about to open the lantern, when my thumb slipped upon the tin frosting, and the old man sprang up in the bed, crying out, "Who's there?" I kept quite still, and said nothing. For a whole hour I did not move a muscle, and in the meantime I did not hear him lie down. He was still sitting up in the bed, listening, just as I have done night after night, hearkening to the death watches in the wall. Presently I heard a slight groan, and I knew it was the groan of the mortal terror. Chataswal, what do you think will happen next? Why has this person I come into the old man's room? It was not a groan of pain or of grief. Oh no. It was a low, stifled sound that arises from the bottom of the soul when overcharged with awe. I knew the sound well. Many a night, just at midnight, when the entire world slept, it has welled up from my own bosom, deepening with its dreadful echo the terrors that distracted me. I say I knew it well. I knew what the old man felt, and pitied him. Although I chuckled at heart, I knew that he had been lying awake ever since the first slight noise. When he heard, when he had turned in the bed, his fears had been ever since growing upon him. स्किप करते हैं थोड़ा सा नीचे आए यहाँ पे डायलॉग्स पे. It is nothing but the wind in the chimney. It is only a mouse crossing the floor, or it is merely a cricket which has made a single chip. Yes, he has been trying to comfort himself with these suppositions कि वो शख्स अपने आप को हौसला देने की कोशिश कर रहा था ये चीजें सोच के. But he had found all in vain, because death, in approaching him, had stalked with his black shadow before him and enveloped the victim. It was the mournful influence of the unperceived shadow that caused him to feel, although he neither saw nor heard, to feel the presence of my head within the room when I had waited for a long time, very patiently, without hearing him lie down. I resolved to open a little, very little service in the lantern, so I opened it. You cannot imagine how stealthily, until at length a single dim ray, like the thread of the spider, shot out from the service and fell upon the vulture eye. It was open, wide open, and I grew furious as I gazed upon it. I saw it with perfect distinctness, distinctness, all a dull blue with hideous veil over it that chilled that very marrow in my bones, but I could see nothing else of the old man's face or person, for I had directed the ray as if by instinct precisely upon the damned spot. And now I have not told you that what you mistake for madness is but over acuteness of the sense. Now I say there came to my ears a low, dull, quick sound, such as a watch makes when enveloped in the curtain. I knew that sound well too. It was the beating of the old man's heart. It increased my fury, as the beating of the drum stimulates the soldier into the courage, but even yet I refrained and kept still. I scarcely breathed. I held the lantern motionless. I tried how steadily I could maintain the ray upon the eye.
Meantime, the hellish tattoo of the heart increased. It grew quicker and quicker and louder every instant. The old man's terror must have been extreme. It grew louder, I say, louder every moment. Do you mark me well? I have told you that I am nervous. So I am. And now, at the dead hour of the night, came the dreadful silence of that old house, so strong a noise that this excited me to the uncontrollable terror. Yet, for some minutes longer, I refrained and stood still. But the beating grew louder, louder. I thought the heart must burst. And now a new anxiety seized me. The sound would be heard by a neighbor. The old man's hour had come. With a loud yell, I threw upon the lantern and leaped into the room. He shrieked once, only once. In an instant, I dragged him to the floor and pulled the heavy bed over him. I then smiled gaily to find that deed so far done. But for many minutes the heart beat on with the muffled sound. This, however, did not vex me. It would not be heard through the wall. At length it ceased. The old man was dead. I removed the bed and examined the corpse. Yes, he was stone dead. I placed my hand upon the heart and held it there many minutes. It was no pulsation. He was stone dead. His eyes would trouble me no more. If still you think me mad, you will think so no longer when I describe the wise precautions I took for the concealment of the body. The night waned and I worked hastily, but in silence. I took up three planks from the flooring of the chamber and deposited all between the scantlings. I then replaced the boards so cleverly, so cunningly, that no human eye, not even his, could have detected anything wrong. There was nothing to wash out, no stain of any kind, no blood spot whatever. I had been too weary of that. When I had made an end of these labors, it was 4 o'clock, still dark as midnight. As the bell sounded the hour, there came a knocking at the street door. I went down to open it with a light heart. For what had I now to fear? There entered three men who introduced themselves with the perfect suavity as officers of the police. A shriek had been heard by a neighbor during the night. Suspicious of foul play had been aroused, information had been lodged at the police office, and they had been deputed to search the premises. I smiled for what I had to fear. I bade the gentleman welcome. The shriek, I said, was my own in a dream. The old man I mentioned was absent in the country. I took my visitors all over the house. I bade them search well. I led them at length into his chamber. I showed them his treasures, secure, undisturbed. In the enthusiasm of my confidence, I brought chairs in the room and desired them here to rest from their fatigues while I myself, in the wild audacity of my perfect triumph, placed my own seat upon the very spot beneath which reposed the corpse of the victim. The officers were satisfied, my manner had convinced them, and I was singularly at ease. They sat while I answered cheerily. They chatted of familiar things, but ere long I felt myself getting pale and wished them gone. My head ached and I fancied a ringing in my ear, but still they sat and still chatted. The ringing became more distinct. I talked more freely to get rid of the feeling, but it continued and it gained definiteness until at length I found that the noise was not within my ears. No doubt
I now grew very pale, but I talked more fluently and with a heightened voice, yet the sound increased, and what could I do? It was low, dull, quick sound, much like the sound a watch makes when enveloped in the cotton. I gasped for breath, and yet the officers heard it not. I talked more quickly, more vehemently, but the noise steadily increased. I arose and argued about the trifles in the high key and with violent uh, gesticulations, but the noise steadily increased. Why would they not be gone? I paced the floor to and fro with heavy strides, as if excited to fury by the observation of the men, but the noise steadily increased. Oh God! What could I do? I foamed, I raved, I swore, I swung the chair upon which I had been sitting and grated upon grated it upon the boards, but the noise arose over and all continually increased. It grew louder, 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 and still the men chatted pleasantly and smiled. Was it possible they heard not? Almighty God! No, no, they heard, they suspected, they knew they were making a mockery of my horror. This I thought, and this I think, but anything was better than this agony. Anything was more tolerable than this derision. I could bear those hypocritical smiles no more. I felt that I must scream and die, and now again. Hark! Louder, louder, louder. Villains! I shrieked. Dissemble no more. I admit the dead. Tear upon the planks. Here, here. It is the beating of his hideous heart. अच्छा जी अब हम टेल टेल हार्ट कहानी तो देख लिया आपने ठीक है सेटिंग इसकी देखते हैं जो जनरल क्रिटिसिज्म होता है इसके हवाले से सेटिंग ऑफ द स्टोरी फर्स्ट ऑफ ऑल कि कहानी सेट कहाँ पे की गई है द स्टोरी कवर्स अ पीरियड ऑफ approximately 8 days with most important action occurring each night around midnight. The location is the home of an elderly man in which the narrator has become a caretaker. ठीक है करेक्टर्स जो हैं वो हमें लीडिंग करेक्टर जो है वो हमारा नैरेटर यानी कि आई जो है वो दिखाई देता है फिर ओल्ड मैन है और उसके बाद पुलिस ऑफिसर्स हैं जो कि नेबर की इतला के ऊपर आते हैं और वहां पर आकर जो है वो अ, छापा मारते हैं कि यहाँ पे कोई इस किस्म का इंसिडेंट तो नहीं हुआ पॉइंट ऑफ व्यू की हम बात करते हैं कि स्टोरी जो है वो फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव में एक्सप्रेस की गई है व्हेन द ऑथर क्रिएट्स द सिचुएशन वेयर द प्रोटैगनिस्ट टेल द personal account, the overall impact of the story is heightened. The narrator in this particular story adds to the overall effect of horror by continually stressing to the reader that he or she is not mad and tries to convince us of that fact by how carefully this brutal crime was planned and executed. ठीक है यानी कि वो पूरी पहले प्लानिंग करता है और उस प्लानिंग के तहत वो अपने इस क्राइम को एग्जीक्यूट करता है पोज story is a case of domestic violence that occurs as a result of an irrational fear यानी कि एक अजीब व गरीब किस्म का फियर है कि अगर किसी की आंख जो है वो दूसरे अंदाज से दिखाई देती है तो इससे आपको डरने की क्या जरूरत है to the narrator that fear is represented by the old man's eye through the narrator Poe describes this eye as being pale blue with a film over it and resembling that of a vulture. Does the narrator have any reason to fear the old man or his eye? कोई reason नहीं है. Is it the phobia that evokes the dark side and eventually drives the narrator to the madness? यानी कि वो narrator जो है वो बिल्कुल मेंटल हो जाता है अपनी मेंटल स्टेट खो बैठता है और वो उस ओल्ड मैन को मर्डर करता है द belief in the evil eye dates back to the ancient times, and even today, the belief centers around the idea that those who possess the evil eye have the power to harm the people
or their possessions by merely looking at them. हमारे यहाँ भी होता है ना कि नजरे बद का कॉन्सेप्ट है ना कि भाई नजर लग जाएगी, उससे बचाव को ऐसे घूर के देख रहा था कि कुछ बुरा हुआ तो आपने देख के नजर लगी, तो बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये कहानी जो है इसको भी प्लान किया गया है। थीम देखते हैं, ह्यूमन नेचर इज डेलिकेट बैलेंस ऑफ लाइट एंड डार्क और गुड एंड evil. Most of the time, this unstable balance is maintained. However, if the balance is lost, the dark or the perverse side surfaces. In this story, it is the vulture eye of the old man that makes the narrator's blood run cold. It is this irrational fear which evokes the dark side and eventually leads to the murder. The narrator plans, एग्जीक्यूट्स एंड कंसील्स द क्राइम, यानी कि नैरेटर बड़े ही आराम सुकून से उसको सब कुछ करके, लेकिन आखिर में चूंकि वो साइकोलॉजिकल ये जो मर्डर उसने कमिट किया है, ये इट सेल्फ रिवील ये करता है उसकी पर्सनैलिटी के बारे में कि ही हैज़ सम साइकोलॉजिकल इश्यूज, यानी कि वो नफसियाती तौर पे दिमागी तौर पे वो ठीक नहीं है। और वही जो उसका मेंटल स्टेट ऑफ माइंड है, वो उसको ये चीज़ उसके जहन में डाल देता है कि उस बंदे की दिल की धड़कन जो है उसकी आवाज आ रही है, और वो इतनी ऊंची है कि वो पुलिस वाले भी सुन रहे हैं, और आखिर में वो मजबूर हो जाता है कि वो एडमिट करता है कि भाई आई हैव कमिटेड दिस क्राइम एंड आई हैव किल्ड दिस ओल्ड मैन। Now you have exercise number 13, and in exercise number 13 you are given certain fill in the blanks, and you have to fill the blanks. Okay. Uh, Read the story once again and answer the following questions by choosing the right answer from the options given with each question. Question number one है, the narrator says his senses were dashed by disease. His senses were dashed by disease. तो weakened, strengthened, destroyed या diminished. So what would you say कि उसकी senses जो थी, जो बीमारी थी, उनको क्या हुआ था? So now again look at the story and find the answer of this question. The narrator says that he dashed the old man, pitied, hated, was afraid of, ya loved. So again look at the story, recall it, and then answer this question. According to the narrator, the old man's eye was like the eye of owl, eagle, crow, or vulture. ठीक है? The old man died after being strangulated by the narrator. A bed was put on top of him, being stabbed by the narrator, hitting his head against a lantern. ठीक है जी, इसी तरीके से बाकी दो हैं एमसीक्यूज हैं, इनको देखिएगा। The following questions will check your overall understanding and to some extent your interpretive skills about the story. Answer the question, what do you think the title of the telltale heart means? जी, तो अब आप सोचें, इमेजिन करें कि जो टाइटल है द टेल हार्ट, इसका क्या मतलब है? तो टाइटल जो है इसका द टेल हार्ट refers to the beating of the heart of the old man, or the sound of the beating of heart of old man at the very end of the novel that drives him to madness, कि पागलपन के अंदर नैरेटर को झोंक देता है उसके दिल की धड़कने की आवाज। तो ये टेल टेल हार्ट जो है ये उसको रेफर करता है। ठीक है, डिस्क्राइब द नैरेटर इन डिटेल, नैरेटर की पर्सनैलिटी के बारे में, यानी कि जो आई है उसके बारे में बताएं कि ये आई जो अपने बारे में कहानी बयान कर रहा है उसके बारे में आपकी क्या परसेप्शन है। तो उसके बारे में तो काफ़ी मटेरियल कहानी के अंदर आया है, वहाँ से देखें और उसकी पर्सनैलिटी को जो है वो डिस्क्राइब करें। हाउ डज द नरेटर एक्ट टुवर्ड द ओल्ड मैन ड्यूरिंग द डे ही loved old man, he showed great respect for him, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ओल्ड मैन को शक हो। अच्छा, he just why doesn't he just kill the man during the day when his eye is open, कि दिन के वक्त क्यों नहीं कत्ल करता? तो दिन के वक्त चूंकि लोग होते हैं and that old man is not asleep, rather he is awake, so he may
draw attention of the people. So that is why he does not want to commit that crime in the daylight. How does the narrator kill the old man? किस तरीके से मारता है? उसको बेड से नीचे गिराता है और उसके ऊपर बेड उल्टा कर देता है. What do the steps that he takes to hide the crime say about him and about his mental state? की जिस तरीके से वो अपने जुर्म को छुपाता है वो उसकी जहनी हालत के बारे में क्या रिवील करता है. तो इट रिवील्स कि ही हैज़ अ वेरी साउंड स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि वो बिल्कुल एक सेहतमंद, एक तंदुरुस्त जहनी हालत में है और उसको सारी चीज़ों का इल्म है. उसने प्रॉपर प्लानिंग के तहत और इस तरीके से कि किसी को ज़रा भर शक ना हो कि इस फ्लोर के प्लैंक्स यानी कि तख्ते जो हैं उनको ओपन किया गया है और उन तख्तों के नीचे कोई चीज़ छुपाई गई है. ठीक है. हमारे यहाँ तो फ्लोर जो होता है वो कंक्रीट का फ्लोर होता है, लेकिन अंग्रेज़ों के यहाँ फ्लोर जो होते हैं यानी कि फर्श जो होता है वो लकड़ी के तख्तों का बनाया जाता है. घर भी अक्सर उनका लकड़ी से ही बनाया जाता है. तो यानी कि लकड़ी के तख्तों को खोल के तो उसके अंदर वो लाश जो है वो छुपा देता है. इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस हैं, इनको प्लीज़ आप खुद देख लीजिएगा. लिटरी डिवाइसेस हम देखते हैं. लिटरी डिवाइसेस आर द मेजर पार्ट ऑफ राइटिंग. A good author will use literary devices to bring the reader into what they are reading. When an author does this, the reader begins to feel and think as a character feels and thinks. This is what Poe does to the reader when he writes a story. Poe uses quite few literary devices or figures of speech in his story. Let us look at just a few of these literary devices. First of all, there is anaphora. Anaphora का इस्तेमाल किया गया है. तो anaphora एक ऐसा figure of speech होता है कि जो कि repeat होता है. ठीक है. Phrase is repeated. The device is used to give emphasis to the idea to create balance in writing. अब रेपिटेशन आई हर्ड और आई हर्ड की दिखाई दे रही है. विद की जो है वो आपको रेपिटेशन दिखाई दे रही है. ही हैड बीन की रेफरेंस. इट इज दे दे एंड दे. तो यहाँ पे आपको ये एनाफोरा की एग्जांपल्स जो हैं वो दिखाई दे रही हैं. ठीक है. मज़ीद वो ये कहता है कि मज़ीद स्टोरी को पढ़ें आप और मज़ीद एनाफोरा की जो एग्जांपल्स हैं उनको आप आइडेंटिफाई करें. The next simile that figure of speech that he has used is called personification, and personification, as you know, is uh, giving human attributes to non-human or non-living things. ठीक है. यानी कि इंसानी क्वालिटीज दे दी जाती हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको. ठीक है. डेथ इन अप्रोचिंग हिम हैड stopped with his black shadow before him and enveloped the victim. डेथ ज़ाहिर है मौत है, एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है और स्टॉक्ड की बात कर रहा है. स्टॉक क्या होता है? छेड़खानी करना. ठीक है. तो वो अब ज़ाहिर है मौत तो छेड़खानी नहीं कर सकती और ना ही तंग कर सकती है, स्टॉक नहीं कर सकती, लेकिन हाँ वो उसको ह्यूमन क्वालिटीज दे रहा है. A watch's minute hand moves more quickly than did mine. Watch's minute hand यानी कि वो जो मिनटों वाला सुई होती है उसको हैंड डिक्लेयर किए गए. वैसे वो होते हैंड्स ही हैं. ठीक है. बिग हैंड स्मॉल हैंड कहा जाता है उनको, लेकिन बहरहाल अगेन हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं एज एन एग्जांपल ऑफ personification.